rate of change of velocity, right? So acceleration is said to be rate of change of velocity. So the first parent was displacement. Displacement gave birth to velocity. Velocity is giving birth to acceleration. Dadaji was vector, Bap is vector, beta will also be vector. Pota. All generations are vector. Acceleration is rate of change of velocity. Now when we say rate of change of velocity, this acceleration is final minus initial divided by t, the time elapsed. Okay. Now there can be two cases. Number one case where the final velocity is greater than the initial velocity. What is the case? Speeding up. Oh, final is greater than initial. ऐसे केस में v minus u जो है वो आपको पॉजिटिव ही देगा, है ना? So in such cases our acceleration will be positive. Look, the word is acceleration. Richness. Positive means more rich. Negative means towards poor के तरफ आ रहे हो. Negative rich means you are poor. So it's like that. Okay. And if in a scenario we get where our final velocity is less than initial velocity, the difference of v minus u will always be negative, which tells me that acceleration is negative. Acceleration negative का मतलब क्या है? That the vehicle is slowing down, right? So we bring another word out here which is known as retardation. Retardation. Retardation is used subject. This is a subjective word. इसका physics में as a formula we have no formula which is based on R. Okay, yeah. Retardation. So question, this is subjective. Somebody might ask you, define retardation. So retardation बेटा हमेशा जब हम आंसर करते हैं retardation का वैल्यू पॉजिटिव में ही लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. इफ यू हैव एन एक्सेलरेशन विच इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रिटार्डेशन विल बी रिटन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नाम ही है इसका रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब स्लो हो रहा है. That means the body is losing its velocity at the rate of 3 meter per second square. If the velocity of the body right now is 6 meter per second, एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 3 meters per second, और एक सेकंड बाद 0 हो जाएगा. रिटार्डेशन जब आपसे कोई पूछता है तो आप जब आपको रिटार्डेशन पूछा तो आप जो वर्कआउट करोगे, the workout will all be based on A, and you will get that A is coming negative. आएगा ही आएगा आपका. और फाइनल जब आंसर छोड़ोगे तब आंसर को लिखना. So you can write like this. Once you are doing the problem, you'll say A is equal to say -3, which means that the body's retardation is 3 meter per second square, or the body is losing velocity at the rate of 3 meter every second. 3 meter per second every second, not 3 meter per second. 3 meter per second every second. Acceleration का डेफिनेशन क्या है? 3 meters per second per second. Every 1 second my velocity comes down by 3 meters per second. So if you are at 9 meters per second right now, in the third second your velocity will be laddu. You are retarding. ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी रिटार्ड करेगा. कंफ्यूजन एकदम मत रखिए. रिटार्डेशन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वी विल नीड एक्सेलरेशन, राइट? And as long as the problem speaks about acceleration, nothing goes from my side. Suppose the question is given to you that Vaibhav applies brakes and the car is retarding at 2 meter per second square. So you will write acceleration equal to -2. आप प्रॉब्लम एक्सीलरेशन से ही करोगे. स्पीड बढ़ेगा तो प्लस है, स्पीड घटेगा तो माइनस है, ब्रेक मारेंगे तो माइनस है. लेकिन if somebody asks you finally, like devils like me will put the question like that only, what is the retardation of the vehicle at the 10 second? So please calculate acceleration and then say, suppose you got acceleration positive, मान लो worst out of scenario, you got acceleration, then what do you write about retardation? You don't, ना retardation कभी negative नहीं. आप लिखोगे the vehicle does not show any retardation, rather is accelerating at the rate of 5 meter per second square. रिटार्डेशन में कभी हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं. गरीब इज ऑलवेज गरीब. देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव गरीब. नेगेटिव गरीब मींस यू आर ट्राइंग टू से दैट ही इज रिच. रिच के लिए हम बोलेंगे पॉजिटिव रिच, नेगेटिव रिच. गरीब इज ऑलवेज पॉजिटिव गरीब. देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव गरीब. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो डाउट. ओके, तो हमने एक्सीलरेशन को देखा. और एक्सीलरेशन में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमेशा याद रखिए इसका मीनिंग क्या होता है.
distance, velocity is meter per second. Every second I cover this much distance. Every second I cover this much distance. This is the definition of velocity. Acceleration's definition is what? Every second. Like say, for example, acceleration is 2 meter per second square. We start at 0. So acceleration मतलब आवाज हमेशा ऐसे जाएगा. This is uniform acceleration. Uniform velocity आवाज में ही आपको समझ आए. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखते हैं कैसा है. जैसे ड्रिल मशीन हम ऑन करते हैं. So when you start the drill machine, it's uniform acceleration. When you leave the trigger, uniform retardation. So uniform acceleration means first at 0, 0. At the first second, what is the speed? 2 meter per second square. Second, what is the speed? 4 meter per second. Next speed, 6 meter per second square. प्रति एक सेकंड 2-2 मीटर पर सेकंड करके बढ़ता जा रहा है. तो गाड़ी कैसा होगा ना, वी करके चला गया. 10 सेकंड तक आते जाते 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई. And you generally cycle with around maximum 20-21. In 10 seconds you are getting back. ठीक है, clear? Okay, very good. तो acceleration हो गया, ये हो गया, displacement हो गया. So time now for our 3 equations of motion whose derivations definitely comes in your pre-board and all. So we'll see the derivations once again. The first equation of motion. First equation of motion always starts with acceleration. The definition से. Okay, what is the definition of acceleration? देखो आप खुद याद कर सकते हो. Acceleration is equal to change in velocity over time taken. है ना बच्चा? तो इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो a को कैसे लिखेंगे? v minus u divided by t. तो यहां से आपका आ गया at is equal to v minus u, यानी कि at plus u is equal to v. अब जस्ट हाथों को क्या करो, फलों का बैग को इस साइड ले लो, सब्जी ऑन दिस साइड. सो v becomes equals to u plus at. Again if you see this formula is something like y equal to, इसको अगर हम ऐसे लिखें v is equal to at plus u, then we say y equal to mx plus c. This format. Now since you have understood slope and all, let's go a little bit mathematical. What is c? Y-intercept. What is u? Y-intercept. This is the constant part. Initial velocity is constant. Plus, this is delivery charges, fixed. This is number of mangoes, kgs of mangoes multiplied by the price. Delivery charges constant ही रहेगा. 80 rupees ही delivery है. तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा? जरा सोचो, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. This is my say velocity axis and this is my say time axis. तो कैसा होगा? This is u. U is here. तो इतना से आगे बढ़ना शुरू करेगा. U plus 80. If it was only 80, it would have gone from here. If u is 0. This is typically y equal to mx plus c graph. Mx plus c. This is what? This is c. C is known as the y-intercept. So here u. Everything in physics is ultimately y equal to mx plus c is a very very important straight line. इससे दुनिया का सब कुछ चलता है. And in y equal to mx plus c, we used to say y is the slope. Now what will be the slope? Acceleration will be the slope. Because you are plotting velocity over time. Slope is always y data over x data. Rise over run. What is rise? Velocity. What is run? Time. Velocity by time? Acceleration. M is slope in our straight lines. Clear? Pehla wala equation. Right? And sometimes if they ask you to solve, अगर आप solve करने भी दिया, graphically भी दिया, तो आराम से आप graph बना के देख सकते हैं. You will be out here. Okay. Next equation of motion. Let's see. So the next equation of motion starts from the definition of average velocity. है ना? Average velocity का definition क्या होता है? Average velocity का definition होता है, sorry, initial velocity plus final velocity divided by 2, obviously when. And the displacement is said to be average velocity into time. ये दो याद रखिए, बस इससे सब आ जाए. Displacement is speed into time.
So here it is average velocity in time. Average velocity हम यहाँ पे क्या लिखें? Average velocity का मतलब हो गया v bar. Any average like mean, ये mean है. So this is equal to u plus v divided by 2. और displacement क्या हो जाता है? v bar multiplied by t. बस अब इसी को लगाना है हमें. तो s का वैल्यू क्या हो गया है? s का वैल्यू हो गया v bar into t. v bar क्या हो गया है? u plus v, right, divided by 2 into t. ठीक है? Now in all the equations of motion you will see one variable missing in every one of the equation. Like say if the first equation of motion, what did we write right now? We wrote v equal to u plus at, है ना? सारा कुछ किसके ऊपर हो रहा है? सुबैट के ऊपर हो रहा है. इसमें देखो s मिसिंग था. अब दूसरे वाले में v मिसिंग होएगा. s equal to ut plus half at square. v को मिसिंग करना है तो v को मिस करा दो यहां से. आ जाओ. So we take u, v की जगह पे क्या लिखेंगे? u plus at into t divided by 2. दिवांशु ठीक है? ठीक है? u plus u कितना हो गया दिवांशु साहब? 2u by 2 plus at by 2 into t. कितना हो गया भाई? फिर 2 ने 2 को काट दिया तो ut हो गया और उधर हो गया हाफ at स्क्वायर और ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन. अंडरस्टूड? u plus at, u और u को जोड़े तो 2u एंड 80 दोनों के नीचे 2 को अलग अलग से लिख लिया और फिर इसने इसको काट लिया. ट्राई करो आप खुद, बोर्ड मत देखो. यू डू इट ऑन योर ओन. ट्रिक तो आपको बता ही दिया ना. इन एवरी यहाँ पे इन दिस द ट्रिक इज यू शुड रिमेंबर दीज टू थिंग्स इन एवरी फॉर्मूला. तो हमने दूसरा वाला फॉर्मूला क्या लगाया? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें v जो है वो मिसिंग है. तीसरा वाला क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसमें कौन मिसिंग है? t मिसिंग है. इसमें t को गायब करना है. right, chale, shall we? Can you do the third equation of motion? Third equation we will be deriving from the second equation. Try and omit t. t को omit करो. t को कहां से omit करोगे? From the first equation. आ जाओ. Come, let's do it from. So second equation of motion gave you what? S equal to ut plus half at square. You are now supposed to come to the third equation, and in third equation we don't have t. So the first equation gave you v is equal to u plus at. बच्चा यहाँ से t का वैल्यू क्या होता है देखो तो v minus u upon a, है ना? That you have to plug. It's all your algebra skills. बस और कुछ नहीं है. देखो u into v minus u by a plus half, this is a, v minus u by a whole square. ठीक है? चले आगे. Okay, so let's make it easy. A and this will become 2a square. So let's write it. See how to make it simple. V minus u divided by a plus we make it a v minus u square divided by 2a square. Can I write it like this? Just a को square बाहर निकाल दिया. Why, Vaibhav? Any issue? Why? You've understood this process. What is this? Whole square. Yeah. I just took the a square outside. A and 2a square. What should be the LCM? A and 2a square. LCM is always the bigger one. A. Hey. Is not 2a square. ये a दे सकता है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये a दे सकता है. ये a और 2a स्क्वायर. इसका एलसीएम निकालो ना. a से करेंगे तो a1. ये क्या रहेगा? 2a. Can't make the bigger multiples. Lowest common multiple. Very nice. He's saying you can't make a bigger smaller. So what is the LCM? What is the LCM? 2a. How 2a? LCM is on. If you multiply 2a to a.
2a square. Clear? 2a square divided by a is how much? 2a. 2a square divided by a. What has happened? Oh yeah. 2a. 2a plus the a. 2a you multiply here. So it becomes 2a u v minus u. Agreed? And here what we will get? 2a square, 2a square. So it's just a into v minus u whole square. Clear? भाई साहब देखो तो अभी भी एक गड़बड़ी होके बैठा है. गड़बड़ी क्या है? हो गया एलसीएम. Now what we can do? We can straight away take out this a. इस a को निकाल दो, इस a को निकाल देते हैं और यहाँ से स्क्वायर से एक निकाल देते हैं. क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए. हाँ यार तुम लोग का ना सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कच्चा है. You all love to do it the मेहनती बालक way. So let's do it. So this becomes 2uv and this becomes minus 2u square plus this is v square then minus 2uv plus u square divided by 2a. So 2uv minus 2uv cancels each other. Okay. And what do you have? 2u square and u square. So we have a v square and this one will give you minus u square divided by 2a. And on this side we have got s. शायद आपके मन में खुशी आ जाना चाहिए. यहाँ से इसको करें तो हमें मिलेगा 2as is equal to v square minus u square. And that's your formula. v square equal to u square plus 2as. देखो तो आप अपने तरह से भी कर सकते हो. If you find that the way I'm simplifying is becoming difficult for you, you do it your way. But end of the day, you should know how to derive it. That's the only thing. Have you understood this process? What have I done? I have replaced both the t. You are actually not lost in physics. You are getting lost in maths. I have taken out both the t's. Fine. After that, a square and 2a square. We have done an idiot way of going this. A square and 2a square, the common multiple is always 2a square. Bada wala hota hai. And he was so right in saying, how can a bigger numbers multiple be a common multiple? This is him and this is me right now on the number line. Okay, who is smaller? I am smaller. Our number line goes on positive side this side. Look, यहाँ देखो तो समझ में आएगा. बात समझो. This is a number line. The number line goes positive on that side. He is one number, I am one number. Who is a smaller number? Me. What is the word? LCM. Lowest common multiple. So my multiple will be ahead of me. His multiple is also ahead of me. We have to find a multiple that is his also, mine also, but is common to both of us. Means something like that water bottle. And the water bottle is a common multiple to him and to me. You have understood? Similar such more common multiple may come, like say the bathroom window of the adjacent flat. But that is a greater multiple as compared to this. This is the lowest. This is LCM. And when we do HCF, highest common factor, I have to go back. It's my factor and his factor. Highest common factor will always be equal or lesser than the smaller number. Lowest common multiple will always be equal to or more than the greater number. In this case, it is the greater number. And such moronic memories of you guys, whenever a number divides another number completely, then the LCM is always the bigger number. 8 और 2 का LCM आप करते हो क्या? नहीं ना. क्यों? क्योंकि 2 8 का खात्मा कर देता है. 2 8 का खात्मा कर देता है. तो आपका LCM क्या हो जाएगा? 8. हाँ, लास्ट 5 मिनट मैं क्या बोला अंगद बोलिए तो एक एक करके सुनता हूँ. हाँ, दिवाली की मिठाई. या अंगद, whatever I was speaking, I am giving you allowance up to 80% accuracy of what I was talking. जरा बोलिए ना, हम सुनते हैं मैं क्या क्या बोला. From the time that I left my pen out there. Okay, 60% accuracy. अभी समझ में आया कहाँ आप खो रहे हो. कल परसों when you go to a college, this is something which is there in the book. आपको ये मिल जाएगा. सुनना. अभी क्या है, आप
two classes of the same professor or lecturer may not be same. In your class I'm speaking something, next year also I'll teach this thing, I might be speaking. Do you think I'll speak hubahu same to same? No. Whenever some things are being taught, सुनने को ब्राइट कीजिए, ये लिखने को तो बुक में भी मिल जाएगा, और ये अगर नहीं हुआ यू विल ब्रिंग इट। सर थर्ड इक्वेशन में बार बार फंस जाता हूँ, कैन यू शो मी अ सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग थर्ड इक्वेशन? लेकिन कुछ बातें बताई एलसीएम एचसीएफ के लिए, ये आपको ग्रेड 10 में भी यूज आएगा। फंस जाओगे वहां पे। अच्छा हाँ 2a को हाँ, कौन सा काटा बेटा? 2a ये वाला स्टेप। तो ये वाला स्टेप कहां से आया? इन दोनों का एलसीएम है 2a स्क्वायर, है ना? 2a स्क्वायर को हमने a से डिवाइड किया, तो कितना बचता है? 2a बचता है। ऐसे ही तो एलसीएम होता है ना, 2a बचता है, तो वो 2a इस u के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना हुआ? 2au। और ये 2a स्क्वायर है, ये भी 2a स्क्वायर है, तो इधर तो 1 ही आएगा, और 1 ने a को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद अभी हमें क्या लेना है? वी हैव टू टेक आउट कॉमन। तो कॉमन कैसे लेंगे? इस पूरे ब्रैकेट से a कैन बी सक्ड आउट, इस पूरे ब्रैकेट से a कैन बी सक्ड आउट। सो a और a, 2 को काटने का मतलब नहीं समझ रहे हो? एक a काट दिया, एक a जिंदा है। अरे इन मैथमेटिक्स इट इज डन लाइक दिस बेटा। these are एडवांस मैथमेटिक्स राइटिंग मेथोडोलॉजी। अब मैं तुम्हें बेबी स्टेप में लिख के दिखाता हूं, तुम होने से कैसे लिखोगे? a कॉमन 1 प्लस 1। अब बेबी स्टेप्स देख लो पहले। a इंटू a, इस a ने a को काटा, तुम्हें कोई आपत्ति है इसमें? नहीं है ना। अल्टीमेटली बचा क्या? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a बचा, 2 बाई a बचा। मैं एडवांस मैथमेटिक्स में इसको कैसे काटूंगा? ये भी a देना चाहिए, ये भी a देना चाहिए, है ना? इससे अगर a काट दो तो सिर्फ 2 रह जाता है। दिस इज अ राइटिंग कन्वेंशन, तो हम ये काट देते हैं। दिस शोज दैट यू हैव टेकन आउट 1a। नाउ इट इज रिमेनिंग विद व्हाट? a टू द पावर 1, यानी कि यहां से भी वही आता है 1 1 a टू द पावर 1। जैसे आपको किसने कहा m स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय 3m4, इसको आप एडवांस मैथमेटिक्स में जब काटोगे, m काट लिया, यहां से m काट लिया, एक m रह गया, और यहां काट के हम करेंगे 3। ये एडवांस राइटिंग कॉन्सेप्ट है। 2a रहना चाहिए ना। आप अगर a काटते तो 2a a स्क्वायर रह जाता, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज द वे वी डू। सो ये कट गया। अब समझ में आया? इसलिए अलजेब्रा करना बढ़ाइए, तब आपका हाथ स्ट्रेट होएगा। ठीक बच्चा? एनी डाउट इन एनी ऑफ द डेरिवेशंस? समझ में आ गया? सो ऑल इन दीज 3 डेरिवेशंस दैट यू विल बी गेटिंग, always remember in each of the derivation, in each of the equations of motion, one of the parameter of SUVAT is missing. And then when the problems come to us, which we will do also, we will try to check which is missing, what to be plugged. ठीक है? After this we go to the graph part. थोड़ा सा बात कर लेंगे, only from NCERT perspective, बहुत आपको ज्ञान दिया हुआ है, you can go. So in order to understand graph in motion, जब भी हम graphs देखते हैं, graphs are analyzed from 2 perspectives. One is slope and one is area. Area means area under the curve बोलते हैं, या फिर ग्राफ बोलते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? याद रखिएगा। ये 2 पे देखते हैं। पहले आइए फटाक से एक बार स्लोप को देख लें। स्लोप इज व्हाट? राइज ओवर रन। अगर आपके पास any line is out here, like this is a line, and you want to calculate, a line has a constant slope throughout, you can calculate the slope anywhere. Ladder है ना, the line has a constant slope। अगर बच्चा बैठाएंगे तो कैसा सुई एक ही लेवल में गिरेगा। कर्व में स्लोप अलग अलग होता है। जब हम कर्व की बात करें, this is a curve, so the curve has a different slope here, here the baby will fall। तो कर्व में slopes are always found by the tangents, but that is 11th class concept. We will be working only on slope, and the slope of a straight line is always constant. Slope of a straight line is always constant, remember that, okay? And if you want to find out the slope, take any 2 points, like this is 1 point, इसका आपको एक x1 मिल गया, इसका आपको एक x2 मिल गया, and you get a y1 and you will get a y2. So the slope is always given by the rise
कितना राइज किए हो आप, y2 minus y1 divided by run. Run is x2 minus x1. Always remember final minus initial is the convention that we put, and that way we will be getting. Now this is a, now more things to understand positive slope. How do you understand positive slope? If a line makes an acute angle with the positive direction of x-axis, याद है कि नहीं, then the slope is said to be positive. सब भूल गए हो, but you cannot afford to forget this. If a line, if there is a line which makes an acute angle, this theta, always look at this theta wherever you want to take out, and look at this theta from positive direction of x-axis. This is x positive, kahin bhi dekh lo, this is x positive, this angle theta, all the angles will be same, they are all corresponding angles, parallel lines and transversal formula. If this angle is acute, the line makes a positive slope, right? If it is obtuse, it is a negative slope. अगर ये line ऐसा बन रहा है and this beta, this angle is obtuse, then we say that it is a negative slope. If the line is horizontal to x-axis, then slope is zero. Slope is zero. And if the line is vertical, slope is infinite. It's infinite slope. Undefined means infinite. देखेंगे अभी. We'll see our cases. Okay. So just remember that the slope. Now, when we talk about grade 9, so and we see slopes of graph. Okay, we see slope. Slope देखने से पहले हमें ये समझना चाहिए the type of graphs that we will get are xt. Oh, sorry, we don't write x with you. We will get a st graph. We will get a vt graph. This graph is the most common, and or else you get a at graph. At graph, right? In all the three graphs, if you see, we do it like this, right? This is say st graph, vt graph, and at graph. So if you see slope क्या आया था, rise over run. So in your mind, always remember that the slope is nothing but a y-axis data divided by a x-axis data, है ना? Because this y-axis will always give you a rise and this will always give you a run. Now put your units on each of the graph. Meter per, this is second, meter per second, second, meter per second square, and this is second. So अगर यहाँ पे हम slope को calculate करेंगे, the slope should give me meter by second. That means in an ST graph, the slope speaks about speed or velocity, either speed or velocity. That's why when we used to show speed, we used to use a distance time graph. Correct? If you see a VT graph, then it is meter per second over second, which is meter per second square. And here it will be meter per second square over second. So this quantity we do not, meter per second square, ऐसा कोई quantity हम define ही नहीं करते हैं at our grade 9 level. So the AT graph का slope हमें कोई data नहीं देता है. AT graph slope does not give us any data. ST graph, no, if you forget also you remember. ST graph meter over second माने velocity. VT graph meter per second square माने acceleration. AT graph does not give us anything. Similarly, if we try to see the area, okay, अभी हम area देखते हैं. Area, whatever two figures you take, as long as you're dealing in 2 dimension, your area will always be a function of the product of x data and y data. सोच के देखो, half base into altitude, half into sum of the parallel sides into perpendicular distance, length into breadth. हर एक figure का area is always a product of x data and y data with some constants. We are not bothered about it. ठीक है ना? Right. अब हम चलते हैं तीनों ग्राफ में फिर से. Let's take our 3 graphs. तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. This is a graph which is ST graph. इसका यूनिट क्या है? मीटर एंड सेकेंड. इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड. This is a VT graph and this is meter per second square into second. This is an AT graph. तो आइए यहाँ पे एरिया देखते हैं. इसका एरिया क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर सेकेंड. Meter second. Have you heard any quantity in physics on meter second? So the ST graph का एरिया हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ये देखिए तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर बन जाता है. वाओ, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता.
That's why I said this graph is most common. Why? This graph slope will also give you a data, area will also give you a data. इसका slope data देगा, area data नहीं देगा. इसका slope data नहीं देता है, पर area data देगा. इसका area देखो क्या है, meter per second square into second, second, which means this is giving you velocity. So if we summarize all these things into a chart and we say that, say for example, this is area and this is slope. बड़ा मजेदार आपको देखने में मिलेगा. आइए बना के देख. Our great man has some match today again. No clues that he didn't come down yesterday also. Achha. Might be after playing match. He is sick. Okay. Now his friends are also bunking classes. They are going for youth festivals and what do you call, and MUN or whatever at grade 10 level. So good. Yeah, that's very good. Excellent. So because I have received my club membership fee. Something is burning. दूध जल रहा है किसी के घर में. Every day. Okay, area and this. So let's write our graphs out here. ST graph, VT graph, और ये क्या हो जाएगा, AT ग्राफ. ठीक है ना. आप सुंदर से बना के भी रख सकते हैं ग्राफ को अच्छा करने के लिए. आइए सुंदर से बना के रखते हैं. क्यों है ओके. Now see, we said area of a ST graph does not give you any data, right? What did we say? Area of ST graph does not give me anything. ST graph का एरिया होगा मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा ना. तो ठीक है, चलो अभी डेटा भी डाल देते हैं, इनमें डेटास भी डाल देते हैं. चलो दिस इज ST ग्राफ, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, मीटर पर सेकंड सेकंड, meter per second square into second. अब जरा देखो, we said that area is multiplication of 2. So इसका एरिया हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. अगर इसका एरिया इंफॉर्मेशन नहीं देता है, it will be criss cross relationship. इसका स्लोप भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं. और सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ जो बनेगा, जहां बच्चों का सबसे ज्यादा आपको रगड़ा जाएगा, रगड़ा पैटीज बनाया जाएगा, वो है ये ग्राफ. इसमें सबसे ज्यादा रगड़ा पैटीज बनेगा. Why? Because भाई साहब इसमें दोनों में ही डेटा मिलता है. Here area will give you, area आपको मीटर बताएगा, which is nothing but talking about displacement, and slope will give you meter per second, which is talking about sorry. Slope will be talking about meter per second square, which is acceleration. इसलिए ये ग्राफ ज्यादा आता है. अच्छा, इसमें स्लोप क्या बताएगा? इसमें स्लोप हमें बताएगा मीटर पर सेकेंड, जो कि है वेलोसिटी. ठीक है ना. और इसमें क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड. अगेन दिस इज आल्सो गिविंग मी वेलोसिटी. तो ये जो जन्म का कुंडली है ना, इसको याद रख ले बेटा, तो लाइफ एकदम सीधी हो जाएगी. और ये कुंडली ऐसे आप जब रोज पढ़ाओगे, ज्योतिष जैसे बन जाओगे. जब इच्छा, यू कैन जनरेट द कुंडली as long as your understanding is correct. All these things, many things I did not tell you when we were first starting the chapter, because then it becomes too much on your plate. Now since you have done the chapter here in your school, paired 2 exams, also gone where your unit tests and all, did many questions, with somewhere you have shown your intelligence, somewhere you found that अरे इसमें बेवकूफी किया. इतना कुछ करने के बाद, if you have started to love physics now, this is another way. And this does not end. The same thing we are going to study in grade 11 also. I still study. हर बार कोई नया किताब पढ़ोगे, good books, कुछ तो नया जानने को मिलेगा. And that way you will be able to understand and correlate. Your life becomes much more easy in grade 11, because 11 is tough. ठीक है. Apart from this, nothing more we will be encountering as a part of our what you call graphs. Now we will take questions based on sample books and all, and we'll try to solve and see whether we can do. कितना है? Time है तो अभी भी.
हाँ, वर्क एनर्जी, हाँ बोलो, इसको यहाँ पे रोकूं अभी, ठीक है, हाँ बताइए, मैं मिटा सकता हूँ? हाँ चलिए, चलिए रहने दीजिए, सुनते हैं, अगर लिखने का होगा तो मिटाऊंगा, बोलिए। टेंजेंट नहीं, डायरेक्शन नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। आप किस चीज की डायरेक्शन जानना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नहीं, अब तो इसको मिटाना पड़ेगा, आ जाइए, पहले बना दे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आ जाओ। दिस इज ए सर्कल, यो सर्कल में यो मारा ऑब्जेक्ट कटे है, ऑब्जेक्ट इधर है, इधर ऑब्जेक्ट है। आप कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? सर्कुलर पाथ में ना, ऐसे जा रहा है। पूछिए अभी आपका सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? किस चीज का डायरेक्शन? डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है फिजिक्स में, डायरेक्शन तो स्केलर है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ही के सवाल से आपको फ्यूज करेंगे, डायरेक्शन तो कुछ होता ही नहीं फिजिक्स में, डायरेक्शन खुद ही स्केलर है। अब मैं आपको और कंफ्यूज करता हूँ, बॉडी हमारी ए पोजीशन पे है और बॉडी कितने गई? बी पोजीशन पे। अब आप पूछना चाहिए मुझे, सर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड बन जाएगा, जबकि डिस्टेंस कवर्ड कैसा है? आर्क है। तो जब आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं अभी मुझे, यहां पूछ सकते हैं सर ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है? पहला एक ये सवाल हो सकता है, सर एज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कहा पूछ रहे हैं भैया? एज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब हमारी बॉडी ए से बी की तरफ जा रहा है तो इस बॉडी में जाहिर सी बात है एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए बी, बट दिस इज अ डायरेक्टेड कॉर्ड, मतलब बी ए मत लिख देना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ vector quantity, though in geometry AB and BA means same, but for us not, it's a directed chord। अभी यहाँ पे आप पूछ सकते हैं सर इस मोशन में इस बॉडी का डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, इस बॉडी में जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, so that will be equal to arc AB। arc AB is the distance, because you told me that body is in circular, I would have also thought कि ये A से अंगद के घर में जाके फिर B पे गया, वो भी तो डिस्टेंस है, बट इन योर क्वेश्चन दिस इज, ये पहला हुआ इस मामले से। अब हम आपको कंफ्यूजन कराने के लिए कुछ और भी बातें डाल देते हैं, आइए मजेदार बातें। अब इस जगह पे इस बॉडी के पास मूव कर रहा है कोई तो वेलोसिटी होगा भाई साहब, है ना? तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू ए, वेलोसिटी इज बी, यानी कि यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दो, दिस इज द वेलोसिटी एट ए, इसको मैंने वेक्टर से लिखा, दिस इज द वेलोसिटी एट बी, इसको मैंने वेक्टर से लिखा। इफ दिस इज, तुम्हारी सवाल से पैदा हो रहा है सर, इफ दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ दिस इज अ यूसीएम केस, देन द वेलोसिटी एट ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड will be exactly equal to the velocity at b magnitude. However, the vector v at a will never be equal to the vector v at b, because in both the cases there is a change in direction. And since this is not there, the Rahu called acceleration is born, because velocity is not same, acceleration is born. Therefore UCM is an accelerated motion। बात समझ में आ रहा है भाई साहब? अच्छा, अब और इसको टफ करते हैं, आइए और भी बातें। ऐसे घूमते घूमते इस पे क्या फोर्स आ रहा है? देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कीपिंग दिस व्हीकल इन द सर्कुलर ट्रैक, सो दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे सेंटर की तरफ एक फोर्स डायरेक्ट हो जाए, यह फोर्स का क्या नाम हो जाएगा भाई साहब? इस फोर्स का नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी। और जहां के आपको जानने की जरूरत नहीं है, एफसी की डेफिनेशन होती है mv²/r, ये आप ग्रेड 11 में समझेंगे। तो अगर इसको आप फोर्स के, इफ यू सी इट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट मींस दिस पार्ट मस्ट बी एक्सीलरेशन। If you do not agree with me, then let us see the unit. V² is meter per second square divided by r, which is another meter है भैया ना।
क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मिनट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हाँ क्या हो गया गलती हो रहा है इसको ठीक कीजिए दिस हैज टू बी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज व्हाट बेटा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर divided by another r. R is the radius. R is another meter. So meter per second square. Yes, this quantity is acceleration. Are you getting it from here? So this is known as mass into centripetal acceleration. This is what you learn in it. So centripetal acceleration. So this force gives rise to another acceleration, which will be a centripetal acceleration. That means if I try to draw the acceleration vectors, I'll get one centripetal acceleration here. And if this is changing, then also you have an acceleration because this is changing. So you have an acceleration due to this also. So एक और acceleration यहाँ भी आएगा. इसका नाम होगा tangential acceleration. There are two accelerations, and the overall acceleration between these two is the vector sum of these two. This is known as my overall acceleration, which is centripetal acceleration plus tangential acceleration. These will come in grade 11. Apart from that, there is one more acceleration called the angular acceleration.